Today we are going to learn our first chapter from first paper, that is mathematical logic. According to our state board previous syllabus, mathematical logic, this chapter carries 8 marks. Means total questions of 8 marks are asked in the board exam. So and the distribution of marks is like this: 3 plus 3 plus 2 equal to 8, or 4 plus 2 plus 2 is equal to 8. Either this option or in this second option. In this way question can be asked in our board examination. So first of all, mathematical logic, in this chapter we have to learn what is meant by statement. So a statement is a simple sentence or assertive sentence or declarative sentence. We can tell it in 3 ways. A statement is a simple sentence, second it is assertive sentence, and third one is it is a declarative sentence. As we in English grammar also you have studied about assertive sentence. Assertive sentence is a simple sentence. Assertive sentence is a simple sentence. So a statement means a simple or an assertive or declarative sentence which may be either true or false, but not both simultaneously. Then only we can say that it is a statement. मैं उसको हिंदी में भी आपको समझने के लिए हिंदी में भी बोलता रहूँगा बीच बीच में. स्टेटमेंट यानी ऐसा सेंटेंस जो या तो सिंपल है या डिक्लेरेटिव सेंटेंस है या असर्टिव सेंटेंस है, जो या तो ट्रू होना चाहिए या फॉल्स होना चाहिए, लेकिन एट द सेम टाइम दोनों नहीं होना चाहिए. उसको कहते हैं हम स्टेटमेंट इन लॉजिक. अब स्टेटमेंट में एग्जांपल पढ़ने से पहले हम ट्रूथ वैल्यू क्या है देख लेते हैं. ट्रूथ वैल्यू मीन्स इफ अ स्टेटमेंट इज ट्रू देन इट इज डिनोटेड बाय कैपिटल T, and if a statement is false then it is denoted by capital F, like this. These two values are known as truth values in logic. Do you understand? आ रहा है समझ में? ठीक है. Now we will see the examples of statement. Statement की डेफिनेशन तो हमने देखा लेकिन एग्जाम्पल नहीं देखा. तो अब हम देखते हैं कि स्टेटमेंट है एक्चुअल में कहते किसको हैं. व्हाट इज मीन बाय स्टेटमेंट. Example 1, see here, 2 is an even number. All of you know that 2 is an even number. It is a simple sentence. It is a simple sentence, or we can say in other words it is an assertive sentence also. It is an assertive sentence also. अब हम देखते हैं उसकी ट्रूथ वैल्यू क्या होना चाहिए. ट्रूथ वैल्यू मीन्स whether it is true or false. Very simple. Truth value means whether it is true or false. So all of you know that 2 is an even number. We are studying from 5th standard. 2 is an even number. So what will be its truth value? True. So 2 is denoted by capital T. Now second example. It is an identity. इसको हम identity कह सकते हैं. 2 plus 3 is equal to 6. Now according to mathematical calculation 2 plus 3 is equal to 6. Is it correct or not? Not. It means that it is false. All the mathematical identities are also statements in logic. जितने भी मैथ्स में हम आइडेंटिटीज या फार्मूले पढ़ते हैं, फॉर एग्जांपल sin 2 थीटा इक्वल टू 2 sin थीटा cos थीटा, it is also an identity and it is a statement. But that is true. sin 2 theta is equal to 2 sin theta cos theta. It is also mathematical identity, but it is true because this formula is correct according to our calculus, trigonometry. Correct है ना, पढ़े ना हमने 11th standard में. तो therefore this identity is true according to our logic. But 2 plus 3 equal to 6, it is false because 2 plus 3 is equal to how much? 5. अगर वहां पर 5 होता तो उसकी ट्रूथ वैल्यू क्या होती थी? T. लेकिन अब यहाँ पर क्या है, 2 plus 3 equal to 6 लिखा मैंने, मीन्स इट्स ट्रूथ वैल्यू विल बी false, F.
Therefore, these are the examples of statement. First is true, second is false, again third example is true, truth value. Now, there are some sentences in logic which are not the statements. मैं क्या कर रहा हूँ, थोड़ा सा ध्यान दो इस पर, attention. There are some sentences, कह रहा हूँ statements नहीं. There are some sentences in logic which are not the statements. अब वो कौन से, यानी ऐसे कुछ सेंटेंस है जो लॉजिक में स्टेटमेंट नहीं है, ऐसा हम क्लियरली कहेंगे. तो वो सेंटेंसेस ये चार टाइप के, वन बाय वन हम डेफिनेशन और एग्जांपल पढ़ लेंगे उसके. फर्स्ट वन इज इंपेरेटिव सेंटेंस. ऑल ऑफ यू हैव स्टडीड इन इंग्लिश ग्रामर व्हाट इज मीन बाय इंपेरेटिव सेंटेंस. अ सेंटेंस इन विच ऑर्डर इज गिवन. ऐसा सेंटेंस जिसमें हम ऑर्डर देते. फॉर एग्जाम्पल उसके सामने लिखा हुआ प्लीज open the door, please close your textbooks, please bring me a glass of water. All these are the imperative sentences in which order is given, and such type of sentences are not the statements in logic. Now second one, interrogative sentence. This also we have studied in English grammar. Interrogative sentence means a sentence in which question is asked. ऐसा सेंटेंस जिसमें हम क्वेश्चन करते हैं किसी से. फॉर एग्जाम्पल, व्हाट इज यूर नेम, हाउ डू यू डू, वेयर आर यू गोइंग, व्हाट आर यू डूइंग. ऑल दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ इंट्रोगेटिव सेंटेंस. these are the interrogative sentences, but they are not the statements in logic. इंट्रोगेटिव सेंटेंस है वो, जैसे कि हमने पहले भी पढ़ा. इंट्रोगेटिव सेंटेंस मींस इन विच क्वेश्चन इज आस्क्ड, बट दीज आर नॉट द स्टेटमेंट्स according to our mathematical logic. Now third one, exclamatory sentence. Exclamatory, all of you know, an exclamatory sentence means a sentence in which there is some exclamation, यानी जहां पर हम ताज्जुब का इजहार करते हैं. Oh, what a beautiful picture it is. Oh, what a dangerous player he is. So such type of sentences are the exclamatory sentences, but these are not the statements in logic. According to our mathematical logic, these are not the statements. And this last example, open sentence. Open sentence means just before we have studied definition of statement. In definition of statement, we have studied that a statement is a simple sentence which may be either true or false, but not both. तो यहाँ पर उसका कोरिलेशन यहाँ पर बनता है. फॉर एग्जाम्पल, ओपन सेंटेंस. ओपन मीन्स विच इज बोथ ट्रू एंड फॉल्स, अपोजिट टू आवर डेफिनेशन. ओपन सेंटेंस मीन्स अ सेंटेंस विच इज अपोजिट टू द डेफिनेशन ऑफ लॉजिक, डेफिनेशन ऑफ स्टेटमेंट. अ सेंटेंस विच में बी बोथ ट्रू एंड फॉल्स. अब वो हम कैसा पहचानेंगे कि ट्रू भी है और फॉल्स भी है. ये एग्जाम्पल दिया, x plus 2 is equal to 5. ओपन क्यों कर रहे हैं हम? बिकॉज वी डोंट नो द वैल्यू ऑफ द वेरिएबल x. x वेरिएबल की वैल्यू हमको पता नहीं है. अब x अगर हम 6 लेते हैं, सपोज द वैल्यू ऑफ x इज 6, so 6 plus 2 equal to how much? 8. So its truth value is whether its truth value may be true. But if we take 3, so if you take 3 plus 2 equal to 5, it is true, and the previous example is false. वहाँ पर हमने एग्जाम्पल क्या लिए थे, 6 की वैल्यू क्या लिए थे, 6 की x की 6 plus 2 is equal to 8. It is false. And in this example, 3 plus 2 equal to 5, it is true. What do you mean from this? It means that if we take the value, different values of x, then the value of this identity changes again and again. Sometimes it is true, sometimes it is false. Therefore, it is called as open. We can't say 100% sure that it is true or it is false. It is both true and false. Therefore,
it is an open sentence and it is not a statement in logic. So all these four examples, that is imperative sentence, interrogative sentence, exclamatory sentence, open sentence, all these examples are not the statements in logic. So we have studied that statement is a simple or assertive or declarative sentence which may be either true or false but not both, and truth value is denoted by either T, capital T, or capital F, and these four types of statements are not these four type of sentences are not the statements in logic. So this is our first online lecture in which we have started the first chapter mathematical logic. अब क्योंकि लॉकडाउन की वजह से हम रोज़ाना क्लासरूम में आकर नहीं पढ़ सकते, इसलिए ये वक्त की ज़रूरत और अहमियत बन गई है कि हमको ऑनलाइन लेक्चर का फ़ायदा उठाना चाहिए. और अगर आज जो मैंने लेक्चर लिया इसमें अगर फिर भी आपको कोई डिफ़िकल्टी है तो आप व्हाट्सएप पर मैसेज दे सकते हैं या मेरे मोबाइल पर पर्सनली कांटेक्ट कर सकते हैं, हम फ़ोन पर भी डिस्कस कर सकते हैं. ठीक है, थैंक यू. सो दिस इज ऑल अबाउट टुडे. From next day we will start our next lecture, that is logical connectives.